We are going to start important question answer of the chapter The Day the Dam Broke by James Thurber. As we have already studied The Day the Dam Broke by James Thurber in detail, now we are going to start question answer section and the important word meaning of the chapter The Day the Dam Broke by James Thurber. So let's start important question answer explanation and word meaning of this chapter, The Day the Dam Broke by James Thurber. Short question answer of this chapter. We will read out one by one and word meaning in detail. So I will explain you in detail all the important question of this chapter because these questions are very important from examination point of view. So let's discuss one by one. Let's start. Now see, we have question number one. How does the panic appear to have started in Ohio? Author James Thurber relates the broken dam rumor in his essay The Day the Dam Broke. He does not mention an explicit cause, rather a probable one, as to how the rumor started in Columbus, Ohio. Business activities were in full swing on High Street, which was the main channel of trade. Some people were making trout, some little boats. Suddenly, somebody began to run, and in just 10 minutes, 2,000 people were abruptly running like a hell, shouting, "Go east, go east, go east." The fear of the broken dam might have been put into words by an old lady in an electric or by a traffic cop or by a small boy. But the Thurber says that no one knows who spread the rumor. Now let's explain in detail. क्वेश्चन को समझ लेना है पैनिक किस तरह स्टार्ट हुआ और जेम थर्बर ने किस तरह बताया कि यह अफरा तफरी किस तरह स्टार्ट हुई, जो र्यूमर था किस तरह स्प्रेड हुआ. Actually, in this essay, writer describe that there is, no reason about running towards east. Actually, nobody knows who spread the rumor. But writer ने क्या कहा है? Actually, rumor started in Columbus, Ohio. बिजनेस एक्टिविटीज वॉज इन फुल स्विंग. लोग अपने कारोबार में बिजी थे क्योंकि आपको पता है कि कोलंबस जो था वो एक मेन कैनियन ऑफ ट्रेड था, मेन सेंटर ऑफ ट्रेड था और एक मेन चैनल ऑफ ट्रेड था. कुछ लोग अपने आप पे जैसे फकर कर रहे थे और बिजनेसमैन थे और some little boy suddenly somebody began to run, as I have discussed, and just 10 minutes 2,000 people were abruptly running like hell. किसी ने अचानक भागना शुरू किया और इसी तरह जो है 2000 के करीब लोग जो थे वो स्पीड से जो है भागना उन्हें शुरू किया. एज आई टोल्ड यू कि जैसे एक आदमी अपनी वाइफ से जो है वो बात कर रहा था एंड ही अटर्ड अ वर्ड शट डैम आई फॉरगॉट, और वो जो है एक्चुअली उनको एक मैरमो रेस्टोरेंट पे जाना था और उनने अपनी वाइफ को ये बताया कि शट डैम आई फॉरगॉट, और वो भागना शुरू कर देता है. somebody realized that ये आदमी जो है वो ये कह रहा है कि डैम वर्ड चिल्ला रहा है और भाग रहा है, इट मीन डैम इज ब्रोकन एंड 2000 पीपल वर एब्रप्टली इन अ फुल फ्लाइट. एंड ओवरऑल ये जो एक ओल्ड लेडी का भी बताया जा रहा है और इवन और स्मॉल बॉय न्यूज़पेपर जो भेज रहे होते हैं उसका, या फिर जेम्स थर्बर कह रहे हैं नो वन नोज एग्जैक्टली हु स्प्रेड दिस र्यूमर. तो ये जो है किस तरह से स्टार्ट हुआ आपने इसी टोन में लिखना है कि somebody started running. शुरू में इस तरह से जो है ये फिर जो है आगे जाके र्यूमर फैल जाता है. ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. हाउ डिड थर्बर मदर कोप विद द सिचुएशन? थर्बर मदर जो है किस तरह सिचुएशन को हैंडल करती है, जेम्स थर्बर की जो खाला होती है. इन हिज ऐसे द डैम ब्रोक, जेम्स थर्बर टेल्स दैट unlike the other people who ran out leaving fires burning,
जो लोग जो होते हैं वो घरों से निकलते हैं, जैसे इवन अपना जैसे जो जो अमन जैसे लेडीज होती हैं वो इवन वहाँ से जो अपने चूल्हे वगैरह घर में ऐसे ही छोड़ के जो है वो ईस्ट की तरफ भागती हैं, बिकॉज एक र्यूमर, जैसे उनको उस वक्त अंदाजा नहीं होता है कि ये र्यूमर है, वो लोग ये समझ रहे होते हैं कि डैम ब्रोक मतलब बंद टूट गया है. uh, and cooking and door wide open. His mother turned out all the fire. She planned to take refuge somewhere in the top of the memorial hall. So she took with her a dozen eggs and 2 loaves of bread as a precaution against hunger during the refuge. However, she could not reach Memorial Hall, एक प्लेस थी एक जहाँ से वो पना लेने के लिए अपने घर से दूर जा रहे थे. मेमोरियल हॉल एक बिल्डिंग है. द फ्लड ऑफ द पीपल हु वर शाउटिंग गो ईस्ट drew her along, and the rest of her family members with her. Now let's explain in detail the important paragraph, important question. How did Thurber mother cope up with the situation? जैम थर्बर की जो खाला होती है वो किस तरह इस सिचुएशन का सामना करती है. नाउ सी, अनलाइक अदर पीपल हु रैन आउट लिविंग फायर बर्निंग एंड फूड कुकिंग डोर वाइड ओपन, जैम थर्बर मदर टर्न्ड आउट ऑल द फायर. जैम थर्बर की जो मदर होती है वो अपनी जैसे शी टर्न्ड आउट ऑल द फायर एंड शी प्लान टू टेक रेफ्यूजी समवेयर इन द टॉप ऑफ द मेमोरियल हॉल. एज आई टोल्ड यू, एक बिल्डिंग जो है वहाँ से दूर होती है, वहाँ पे वो टॉप फ्लोर पे एज ए रेफ्यूजी के तौर पे जैसे पनाह लेने के लिए वहाँ पे रहना चाह रहे थे ताकि इससे बचा जा सके, जो पानी उनके घरों तक ना आ जाए. शी टुक आउट विद हर डजन एग्स एंड 2 loaves ऑफ ब्रेड एज ए प्रिकॉशन अगर हंगर. कह रहे हैं कि उन्हें ये लग रहा था उनकी मदर को कि आगे पता नहीं कितना टाइम वहाँ पे रहना पड़ जाए, तो उन्होंने 2 जो है लीव्स ऑफ ब्रेड एंड जैसे 2 loaves ऑफ ब्रेड एंड साथ में डजन एग वगैरह वो देती है. और शी कुड नॉट रीच मेमोरियल हॉल एट द फ्लड ऑफ द पीपल. बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए वहां तक वो पहुंच तो नहीं पाते, और लोग चिल्ला रहे होते हैं ईस्ट की तरफ भागे, ईस्ट की तरफ भागे, और बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, और ओवरऑल दे वर रनिंग टुवर्ड्स ईस्ट बिकॉज ऑफ द रूमर ऑन द 12th March 1913 about the day the dam broke. So this question, as we have understood the meaning of the question, how did Thurber mother, full name James Thurber, James Grove Thurber, mother cope up with the situation? इसको वर्डिंग चेंज करके भी दे सकते हैं. We are, I am explaining you in detail all the important answer of the question as well, because these questions are very important. So for the easy explanation of these answer, for a better understanding, I am trying to explain this chapter question as well as the answer in detail. Now let's start next question. Now see, how long did the panic last, and how was order restored? पैनिक कितनी देर चलता है और कैसे जो है ऑर्डर रिस्टोर्ड होता है, इसके बारे में रीड आउट कर लेते हैं. The broken dam rumor, as James Thurber mentioned in his essay The Day the Dam Broke, ये जो था 12 मार्च 1913 को बन टूटा था, जिसका र्यूमर जैसे लोगों तक ये फैल गया था, एक्चुअली रियल में बन नहीं टूटा था. डिड नॉट लास्ट मोर देन 2 hours. द एक्चुअल आंसर इज 2 घंटे से भी कम टाइम के दौरान जो है ये इस तरह लोग पैनिक में थे. द टैंगल्ड इवैक्यूएशन ऑफ द सिटी एंडेड एज abruptly means suddenly, as it began, and all the people silent went to their home, leaving the street peaceful and deserted. The order was restored by the मिलिट्री मैन, जो लोग अनाउंसमेंट कर रहे थे, मिलिट्री मैन मेगाफोन पे अनाउंस कर रहे थे. However, their bellowing through the megaphone initially added to the confusion and increased the panic, because people thought they were saying the dam has now broken. ये जो है एक और लोगों में एक अफरा तफरी और बेचैनी फैल जाती है जब वो बताते हैं कि बंद, वो गलत समझ बैठते हैं कि वो समझते हैं डैम अभी टूटा है, rather than dam has not broken, as actual announcement was there. Now see,
पैनिक जो था 2 घंटे से भी कम दौरानिया उनका था, और पूरा शहर इवैक्यूएटेड तकरीबन ये जल्दी से हो गया, और बहुत सारे लोग जो थे जो अपने घरों की तरफ बाद में आते हैं जब वो स्ट्रीट बिल्कुल पीसफुल और डेजर्टेड होती हैं, और ओवरऑल मिलिट्री मैन जब अनाउंस करते हैं कि मेगाफोन पे कि डैम नहीं टूटा है, बट इनिशियली एक कंफ्यूजन फैल जाती है। लोग तो उसको ये समझ रहे होते हैं कि डैम हैज नाउ ब्रोकन, और लोग जो है मशरक की तरफ भागते हैं, और बाद में लोगों को ये कंफर्म होता है कि एक्चुअली डैम हैज नॉट ब्रोकन, और फिर लोग जो है बड़ी मुश्किल से अपने घरों की तरफ आते हैं, और जो है उन्हें फिर अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली इट वाज र्यूमर, और सुबह से शाम हो गई अभी तक कोई जो है पानी के आने की आवाज़ नहीं है। Next question, this one is very important. Why did Dr. Mallory think that the floodwater were about to engulf, drown him? Dr. Mallory passed the writer's aunt and in his panic said, "It's got us." He was sure that the flood water were going to sweep him away. He actually mistook the swishing sound of the skid for the rushing water. So while running to save his life, he failed. He kept lying flat on his face as though sure that the flood waters would engulf him. And soon the boy on the skid rushed past him, and only then he realized what he had been running from. एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि जेम्स थर्बर जो है डॉक्टर मेलोरी के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर मेलोरी ने क्या सोचा था, जो स्केट शूज के आने की आवाज़ थी वो उनको पानी के आने की आवाज़ समझ बैठते हैं। एक्चुअली डॉक्टर मेलोरी लुक लाइक रॉबर्ट ब्राउनिंग की तरह दिखते हैं, और इसमें उन्होंने बताया कि राइटर व्हेन द डॉक्टर मेलोरी पास्ट जेम्स थर्बर ऑन्ट एडिट टेलर एंड इन इट्स प्लेस सेड दैट इज गॉडस, और वो फ्लड वाटर जो है उन्हें लग रहा था कि गोइंग टू स्वीप हिम अवे. He actually mistook the swishing sound of a skate for the rushing sound of water. As I told you, the boy was running and is wearing a skate shoes, and later on, Dr. Mallory realized that I mistook that the sound of the skate shoes as a rushing sound of water. So while running to save his life, Phil kept lying flat on his face, as he was sure that the flood water were about to engulf him. उन्हें लग रहा था कि यह पानी मुझे बाहर निगल ले जाएगा. And then the boy and the skate rushed past him, and then he realized that what he had been running from. जब उन्हें हकीकत पता चलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो क्यों भाग रहा था, ये तो जो स्केट शूज की जो है आवाज़ है, not the rushing sound of water, though he was very much scared about the rushing sound of water. तो ये हमने जो है रीड आउट किया डॉक्टर मेलोरी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नाउ सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द सिटीजन, जो कोलंबस के रहने वाले लोग होते हैं, नॉट केयर टू टॉक अबाउट द इवेंट्स ऑफ द मार्च 1913. एक्चुअली 12 मार्च 1913 का इवेंट था. The citizens of the Columbus were so ashamed of their conduct that the previous day that nobody had the courage to talk about the event of 12th March 1913. It was only after 2 years or more than the people plucked courage to talk about the broken dam rumor. And jokingly, but there are a few people like Dr. Mallory who even after 20 years, ये जो 20 साल का दौरानिया था, would shut their mouth tightly because they were terribly ashamed of their conduct on the 12th March 1913. Now let's explain in detail the explanation of the question. कोलंबस के लोग जो होते हैं 12 मार्च 1913 को इस इवेंट के बारे में, इस लॉन्ग रन के बारे में क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते, क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं उसके ऊपर बात करना चाहते. Actually, the citizen of Columbus was so ashamed of their conduct
on the previous day, क्योंकि वो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, किसी के पास हिम्मत नहीं होती इसके बारे में बात करें, because it was only after 2 years or more than people have courage to talk about the broken dam rumor jokingly. बट ओवरऑल लोग बात करना नहीं चाहते। कुछ ही लोग डॉक्टर मेलोरी जैसे होते हैं, वो इवन 20 साल के बाद जब भी कोई ऐसी बात लोग करते हैं कि ये आप क्या हुआ था उस दिन इस वाक्य में, लोग जो है जो शामिल होते हैं उनसे कभी पूछते हैं या कोई जिक्र करते हैं, तो फिर जो है उनको लोगों को शेम फील करते हैं लोग ऑफ द ग्रेट रन ऑफ द 12th मार्च 1913 व्हाट सो एवर हैपेंड ऑन द हाई स्ट्रीट, और लोग जिस तरह भाग रहे होते हैं तो लोगों को एक किस्म की जैसे शर्मिंदगी महसूस होती है। जैसे हमने डॉक्टर मेलोरी की अभी पढ़ा, ही मिस्टूक द rushing sound of skid at the swishing sound of a skid at the rushing sound of water। और ये जो मेन हमने इम्पोर्टेंट डिटेल्स में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर रीड आउट कर लिए हैं। होपफुली आपको इस चैप्टर का आंसर जो है समझ में आ गया होगा। लोग इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि लोगों को अशेम्ड फील हुआ था और लोगों को शर्मिंदगी फील हुई थी। कह रहे हैं डॉक्टर मेलोरी जैसे लोग भी, इसको काफ़ी टाइम गुजर चुका है बट वो फिर अपना जो माउथ शट कर लेते हैं और बात नहीं करना चाहते इस इवेंट के बारे में, बिकॉज दे वर अशेम्ड ऑफ देयर कंडक्ट। तो ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर रीड आउट किया। नाउ लेट्स मूव टू अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड sardonic but affectionate view in the day the dam broke। ये क्या था जो थर्ड sardonic but affectionate view of human behavior, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन राइटर ने किस तरह आपके सामने रखा है। Actually, the day the dam broke is an extremely amusing and a humorous essay. The author poked fun at the panic-stricken people of Oyo who thought that their lives were in danger because the dam had given away. And the writer laughed at the mob psychology, as I told you, when the people gathered and all thought that the dam is broken. Actually, it was rumor, and how it works in a given situation. A person in a mob does not think or rationalize. He merely follows the dictates of others. So while the author, as I told you, James Harper criticizes the crowd for not using their brain and behaving stupidly, yet he sympathizes with them, हमदर्दी जताना for the suffering they underwent। वो राइटर हमदर्दी जताता है। This is his affectionate view of crowd। Now देखें इसमें यही बताया गया कि actually the day the dam broke is an extremely amusing and humorous essay। As I told you, James Thurber was great humorist and एक मज़ाहिया राइटर थे, तो एक पैनिक स्ट्रकन पीपल का एक फ़नी वे में आपके सामने एक एलाबोरेट किया है। उन्होंने राइटर ने कहा है कि when people lives were in danger when the dam had given away, and लोग जो है मुस्कुराते हैं और because of the mob psychology and the crowd gathered on the high street and they were running towards east, and how it works in a given situation। इवन कह रहे हैं कि राइटर कहते हैं कि लोग जो है अपना जहन इस्तेमाल नहीं करते और दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जो लोग डिक्टेट करते हैं उसी को यकीन समझ के आगे बढ़ते हैं, और क्रिटिसाइज करता है कि लोग अपना जहन इस्तेमाल नहीं करते हैं और स्टूपिडली बिहेव करते हैं। दो ही सिंपैथाइज, हमदर्दी जताता है कि आफ्टर द सफरिंग दे अंडरवेंट, and this is an affectionate view of human behavior of the crowd या view of the crowd। तो ये हमने ओवरऑल ये क्वेश्चन का हमने आंसर रीड किया। थर्ड sardonic but affectionate view of life क्या है डे द डैम ब्रोक में, इसके बारे में हमने रीड आउट किया। अब नेक्स्ट हमने जो है क्वेश्चन जो है उसको हम पढ़ लेते हैं। लेट्स सी हाउ डज द पैनिक स्टार्टेड एंड हाउ डिड एंड इन अ डे द डैम ब्रोक। किस तरह पैनिक स्टार्ट होता है, कैसे खत्म होता है। The author is not sure as to how the panic began the day the dam broke. He feels perhaps it began some such manner at about noon of 12 March 1913 on the high street
Suddenly somebody began to run. Maybe he was late for an appointment to meet his wife. Whatsoever it was, he ran east. He was followed by a fat gentleman of affair. He walked at a trot. Within 10 minutes, everybody on High Street was running in a panic, and the panic ended abruptly as it began. It started for 2 hours when finally order was restored by military men announcing over megaphone that the ram has not broken. But the people in their confusion heard that the dam has now broken, and thus the people with renewed strength started to run at once. The mob was brought under control. अब देखें इसमें क्या बताया गया है कि ऑथर कहता है कि पैनिक किस तरह स्टार्ट हुआ, कब जो है स्टार्ट हुआ, कैसे खत्म हुआ. एज आई टोल्ड यू एट द नून ऑफ 12 मार्च 1939 स्ट्रीट की बात कर रहे हैं कि somebody began to run. हो सकता है कोई आदमी था, वो अपनी वाइफ से उनकी अपॉइंटमेंट टू मीट एट द मैम और रेस्टोरेंट एंड आई फॉरगॉट एंड वट एवर इट वॉज इन ईस्ट. और उसके बाद कुछ एक जेंटलमैन होता है, he also walked and run in and trot, and within 10 minutes everybody on the high street was running panic. तो इसी तरह जो है पैनिक जैसे एब्रप्टली स्टार्ट होता है, इसी तरह एंड में ख़त्म भी होता है. बट इट टेक्स 2 hours. फाइनली ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड बाय मिलिट्री मैन. पहले तो मिलिट्री मैन जैसे लोग अनाउंस करते हैं कि डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, बट ये कन्फ्यूजन लोगों में फैल जाती है. लोग ये समझते हैं कि डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, एंड एक लोग दोबारा रीन्यू स्ट्रेंथ करते हैं एंड दे स्टार्टेड टू रन. एंड फनी थिंग वाज दैट पीपल कुछ लोग इस तरह भाग रहे होते हैं, कुछ लोग थक जाते हैं, फ्रैंकलिन पार्क में दरख्त पे चढ़ जाते हैं, और कुछ लोग आगे जाते हैं. बट एट लास्ट द मोब वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड रिटर्न होम साइलेंटली. तो ये हमने रीड आउट किया. एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड आउट कर लेते हैं. लेट्स सी. ये जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा. अभी नेक्स्ट जो हमारे जो वर्ड मीनिंग के जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो मैच द कॉलम वगैरह होता है, उसका हम रीड आउट कर लेते हैं, फिर आपको मैं समझा भी देता हूँ. टर्मोइल, कंफ्यूजन. Perilous means dangerous, ennobled, got fame, demoralized, insulted. Splendor, magnificence, or we can say brilliance. Misconception, misunderstanding. Streaming, flowing, impede, hinder, hold back, roaring water, fast flowing water. Grotesque, fantastic, or we can say that monstrous. Wheedle, persuade, cox, clarion, dangerous, and announcement. Retreating, withdrawing, or moving back. Now see, these are the important words. Let's explain. Turmoil means confusion, परेशानी होना, अफरा-तफरी होना. Perilous, we use this word as in writer use this word with the afternoon, perilous afternoon, like the dangers, because when at the time of the afternoon, when the day the dam broke, and it was risky. And ennobled, got fame, शोहरत वगैरह जिसे कहते हैं, and demoralized, insult वगैरह होना. splendor is something brilliant and something magnificent. misconception, गलत फहमी को कहते हैं. misunderstanding को कहते हैं. streaming means flowing, and impede, hinder, रुकावट होना. hold back, ये पीछे हट जाना, ये भी दोनों मीनिंग्स हैं. roaring water, fast flowing water को कहते हैं. grotesque means fantastic, एक वर्ड ये है. and monstrous भी sometime जो है यूज करते हैं. wheedle, persuade करना, राजी करना. cox, the same thing. clarion, एक बहुत डेंजरस अनाउंसमेंट हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई वाक्य हुआ हो. retreating, withdrawing और moving back. ये उसके बाद नेक्स्ट हम जो है कुछ वर्ड रीड आउट कर लेते हैं. वेंजफुल, रूथलेस, जैसे वेंजीन्स का रिवेंज होना वर्ड का मीनिंग होती है. बॉलिंग, क्राइंग, रोना. bobtail and ragtag, like every person, हर किस्म के जो लोग थे वहाँ पे. melted away, like the vanished, गायब हो जाना, और disappeared is the same thing. Stamps means like a running crowd, जो भागने वाले लोग थे. black stream of people, they were running towards east. authentication, verification कहते हैं, confirmation कहते हैं किसी चीज़ की. and tranquil, calm होना, peaceful होना.
पुरसुकून होना, डॉग ट्रॉट ऑफ अ डॉग भैंस, लाइक अ डॉग भैंस, एंड कोलैप्स मीन्स फॉल डाउन, गिर जाना नीचे, एंड कोलैप्स के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये लाइफ टाइम एग्जाम में पहले देते रहते थे, क्रैंक का मतलब मीटिंग द एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट हो जाना, एंड मम्बल, स्पीक अनक्लियरली, जो ऐसे अल्फाज जो क्लियरली ना बोले जा सकें। सैनिकल कहते हैं पैसिमिस्ट माइंडेड, ऑलवेज थिंक अबाउट नेगेटिव, थिंक्स नेगेटिवली अबाउट, एंड द सी थिंग थ्रॉन्ग मीन्स मैड क्राउड, जैसे लोग जैसे अफरा तफरी में आए हुए थे, भाग दौड़ में लगे हुए थे, देयर वर ह्यू एंड क्राई अमंग पीपल। तो ये जो हमने वर्ड मीनिंग पढ़ी, इसमें अथेंटिसेशन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरिफिकेशन करना किसी चीज़ की, कंफर्मेशन देना, ट्रैंक्विल का मतलब काम और पीसफुल, पुरसुकून रहना, कोलैप्स, ट्रैंक, डॉग ट्रॉट, मम्बल, सिनिकल। एक हम ऑप्टिमिस्टिक पढ़ते हैं, जो लोग पॉजिटिव माइंडेड होते हैं, दे ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, एंड सिनिकल मीन्स पैसिमिस्टिक, नेगेटिव सोचना, एंड सी थिंग रॉन्ग मीन्स बैड क्राउड। ये जो हमने रीडिंग जो वर्ड मीनिंग पढ़े हैं, एक्चुअली उसका एग्जाम में पैटर्न ये होता है कि एक कॉलम देते हैं आपको, जो है मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी, तो आपने उसको डिटेल में जो है उसकी जो है मैच कॉलम करने होते हैं, और ओवरऑल इसके ऊपर मार्किंग होती है। ये ग्रामर में क्वेश्चन आता है, तो ये होपफुली आपको जो है वर्ड मीनिंग्स भी जो है समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये सारे जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं इस चैप्टर में, वोकैब बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने वर्ड्स की मीनिंग भी मैंने आपको डिटेल्स में समझाई है, ताकि आपको और ज़्यादा जो है क्लियरिटी हो जाए। Now we have completed this chapter, and hopefully आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। हमने डिटेल्स में इसके ऊपर डिस्कशन की है, all the important question answer, word meaning and explanation of the whole chapter, the day the dam broke by James Thurber। तो होपफुली आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। आपने जो है हमने इसको जो है डिटेल्स में जो है एक्सप्लेन किया है, और होपफुली जो है चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।